It is 4 p.m. in the evening, and I didn't study anything from the morning. I wasted all time, but that is not going to stop us from acing today. Today will be day one of my 35 days studying to get 99 percentile from zero, starting from zero. And what I'm going to do today is I'm going to revise chemistry, whole inorganic and chemistry and organic chemistry. I'm going to revise completely and do some problems, and also revise electrostatics, current, electricity, magnetism part in physics. Yeah, we're going to do that. I'm going to study, like, my plan for timings is 4, 5, 6, 7, 8, like 4 to 9. We're going to study continuously for 5 hours, and then 10 to 11, and then in between we'll have our dinner. That's it. So let's do. I have my emotional support with me, and let's start. है ना, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिक का नोट्स है मेरे पास, वो सब रिएजेंट्स का वीडियो, आई मीन रिएजेंट्स की नोट्स डिस्कस रिवाइज कर रही थी, बट आई कुडंट रिकॉल ऑल ऑफ दिस. मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे. एक्चुअली आई सॉ दिस वीडियो फॉर रिएजेंट्स, टॉप 100 टॉप रिएजेंट्स फ्रॉम साक्षी मैम. सम लगभग 3 hours 50 minutes का है. आई सॉ दिस वीडियो व्हेन इन 2024 में मैंने ये वीडियो देखा है, सो आई कुडंट रिमेंबर. तब से आई डिडंट रिवाइज इट. आई जस्ट आई हैड अ वेरी बैड हैबिट कि मैं नोट्स लिखती हूँ बहुत पूरे ब्यूटीफुली सजा सजा के लिखती हूँ. देखो आप, इतने ब्यूटीफुल नॉट वो, बट ये नोट्स ब्यूटीफुल तरीके से लिखती हूँ, बट I don't revise them. That is a very bad habit of mine. So I didn't revise all of these, and then I forgot what I actually wrote. So what I'm thinking right now is I'm going to invest 2 hours of my life and rewatch this video for whole life. ठीक है, because this is very important. इससे ही लगभग 3-4 सवाल आ जाते हैं JEE मेंस के पेपर में with this particular video. So I'm just gonna rewatch this video, revise all of these reagents. Notes मेरे पास already है, तो it will not take much time. Okay, let's go. और 4:20 हो गई है and मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया. I don't know why मैं ऐसा करती हूँ, पर चलो अब शुरू करते हैं. The time is 6:41 PM and मैं तब से, मतलब 4 o'clock से बस टाइम पास करी मैं. आई जस्ट पास टाइम लाइक आई डोंट नो. आई सॉ शॉर्ट्स. मतलब यार ऐसा क्यों होता है यार? आई डोंट नो. मैं बहुत ही ओनली वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर जेईई मेंस, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत टाइम है, पर मतलब क्यों करती हूँ मैं ऐसे, पता ही नहीं. आई डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल इन फर्स्ट प्लेस. दैट इज वेरी बैड थिंग. आई वेस्टेड दैट टाइम, 2 घंटे. आई वेस्टेड ऑल ऑफ दैट टाइम एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट 6:42, almost 7. एंड हाउ कैन आई स्टडी फॉर 6 hours टुडे? हाँ, आज डे 1 होगा कि नहीं होगा, या डे 0 कर लूँ या कल डे 1 कर लूँ, कुछ भी. मतलब चलो, आज ये वीडियो कंप्लीट करके सोऊंगी बस. पता नहीं क्या होगा, ये वीडियो कंप्लीट करूँगी. या दैट्स इट. आई होप आई चेंज यू डूड. और मैं बहुत सारी मैगी खा रही हूँ, वो भी रॉ वाली. पता नहीं क्यों मुझे एडिक्शन सा हो गया है, क्या ही करे. इट इज़ 7:15 एंड मैंने कुछ नहीं किया सच में. आई वॉज जस्ट वॉचिंग शॉर्ट्स एंड वॉचिंग सम रैंडम वीडियोज़ फ्रॉम देन. मतलब यार कुछ नहीं हो सकता यार, मेरा कुछ नहीं हो सकता. आई फील लाइक दिस, मेरा कुछ नहीं हो सकता. मैं बहुत टाइम पास करती हूँ एंड आई एम सो शेमफुल ऑल्सो टू टेल दैट. मतलब जी कुछ नहीं, मतलब नथिंग. आई डिड नथिंग टुडे. I just wasted my time. I saw so many shots. I scrolled reels on Instagram. I decided to delete my Instagram, actually, and also YouTube maybe in my phone, because I see a lot of shots. And I saw so many videos on some random stuff. And I just wasted all the time. सुबह 2 o'clock से जब मैंने वो मोटिवेशन का वीडियो बनाया था, from then to now I did study nothing, because I actually found out that I've been procrastinating from the past 2 years continuously. ये है मेरा 3rd year, right, studying for JEE. From the past 2 years I've been procrastinating continuously, and that became a habit for me. So it became so obvious, like it is so hard for me to get out of it right now. But वो every day I procrastinate, वो shell जो है वो thick होता गया. My procrastination का habit, it became easier and easier. And now me breaking that is becoming so tougher, because that is so thick and so rigid in me that I'm not able to study properly. Is a kind of excuse which I'm giving. Why am I not studying? But yeah, this is what I think. Why am I not able to start or able to study? Because yeah, the reason I gave. So I just took one decision कि I'm gonna wake up early tomorrow. I'll just show you my plan once again. So I just randomly made this plan. I didn't think it should be neat or not. 6 to 10 I'll be studying for 4 hours. Morning 6 o'clock. 11 to 1 I'll be studying for 2 hours. 2 to 7 I'll be studying for 5 hours. 8 to 9 I'll be studying for 1 hour. 9 to 10:30 I'll be studying for 1 hour. Total 13 hours हो जाएंगे. 12 घंटे normally हो जाएंगे. So what I'm going to do in this time, 6 to 10, 2 hours I'm doing physical chemistry, because I'm very weak in it. Starting I'm going to watch some lecture, or I can swap these both. 2 hours organic plus inorganic revision करूँगी. 11 to 12 tomorrow. 11 to 12 I'll be doing physics का एक chapter का theory. Maybe it might be electrostatics or current electricity. वो electric magnetism वो 12 के chapter से करूँगी. 2 to 7 I'll do physics problems, and 8 to 9 I'll also do physics problems, and I'll revise 9 to 9:30 to 10:30 I'll revise everything what I did, right. तो मुझे 8 hours 1 chapter लगेंगे physics को complete करने के लिए. So I should complete 1 chapter in this portion of time. 2 hours I will be doing theory. 4 hours 6 hours I'll be solving problems. No, 2 hours, yeah, and then 4 hours I'll be doing chemistry, right.
तो दैट्स इट। एक्चुअली व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ इज़ एक प्रॉब्लम मुझे करने के लिए 10 मिनट लगेंगे ईजिली, बिकॉज आई डिड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स टिल नाउ। आई हैव जीरो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस। आई एम लिटरली एट जीरो राइट नाउ गाइस, बिलीव मी और नॉट। आई एम अ ड्रॉपर बट 30 days बाकी, एंड आई एम सो शेमफुल टू टेल दैट आई एम एट जीरो, बट स्टिल आई एम एट जीरो। आई हैव 0% प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मुझे इसे एनी हाउ इंप्रूव करनी है, दैट इज वाई आई शुड सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। तो आई विल टेक 10 minutes to solve one problem. So in an hour I may solve 6 problems. I am doing it for 5 to 6 hours, so I may solve 30 problems one day. So 30 physics में और सुबह 30 to 60 chemistry में, maths में कुछ, तो totally 100 problems in a day I should be solving. Right. This is my total का plan for tomorrow. That's it. I have to implement this. हर रोज़ मुझे यही implement करना है। maths का देख लेंगे, we'll see maths about maths. But that's it. If I implement this now, I will definitely, because I don't think मतलब right now mostly 95% of JE people will not work this much hard if I do this. Will not work this much hard tomorrow. Like, if I should get 99 percentile in the next 30 days from zero, then I should work harder than 99% of JE aspirants who are working hard right now, right? So I think this is a plan where 99% of people will not follow and only top 1% will follow, because this is hard. At least top 2 to 3% या 5% ही करेंगे ये तरह के स्टडी। 13 hours of study a day is what I feel. बताइए, if you are studying 13 hours, please let me know in the comments. And that's it. This is my plan. This is all what I'm going to do. I didn't study anything today, but tomorrow ऐसा नहीं होगा. I'm going to give each and every clip, every hour update I will try to give. I will try to document everything, because this will be a proof that I cracked JEE Mains 99 percentile in just 35 days. That's it. और नहीं बोलूँगी. I'm going to sleep right now. As you can see, it is 10:39, 10:40 हो रहा है. मुझे ये edit करना है. Edit करके I should post and then I'll sleep. That's it, guys. All the best, guys. Good night. Please let me know in the comments what all you did, and chalo.